हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लिपर सर्किट। सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ ग्राफ बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड एन आउटपुट वोल्टेज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एज सच एक इनपुट वेवफॉर्म लिया है एंड दिस इज द पर्टिकुलर आउटपुट फॉर दैट, एंड फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज अ नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि जो हमारी इनपुट में नेगेटिव वेवफॉर्म था वो एज सच आउटपुट में जाकर क्लिप हो जाता है। So from this we can form an expression that V output is equal to V input when our V input is greater than equal to 0 and V output is equal to 0 when V input is less than 0. अब बात करें इसकी प्लॉटिंग की, तो on the y axis we have our output voltage and on the x axis we have our input voltage. And first case में when our V output is equal to V input, in case of V input greater than equal to 0, हमारा एक slant सा slope बनेगा. Now why it is becoming slant? So उसके लिए रीजन ये है दैट आर वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट, जिसका मतलब है दैट y इज इक्वल टू x. नाउ वी नो आवर इक्वेशन ऑफ स्लोप दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है. सो इन दिस केस c इज इक्वल टू 0 एंड m हमारा 1 आ रहा है. नाउ वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू 1, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और आवर स्लोप इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंड सेकंड जो हमारे पास है दैट इज v आउटपुट इक्वल्स टू 0 व्हेन vi इज लेस देन 0. तो उसका एज सच प्लॉट यहाँ पे हमने एज सच करा हुआ है. So that was all for this video and I will see you in the next one.